Namaskar children, I am Poonam Bagga welcoming you once again in your maths class. We are studying chapter 7 coordinate geometry from class 10th maths. In our previous video we completed the first 5 questions from exercise 7.4. Today we will be completing the remaining questions, that is question number 6 to 8 from it, and with it we will be completing this chapter also. So let us proceed with question number 6. The vertices of a triangle ABC are A, B and C with given coordinates. A line is drawn to intersect sides AB and AC at points D and E respectively such that AD upon AB is equal to AE upon AC equal to 1 by 4. Calculate the area of the triangle ADE and compare it with the area of triangle ABC. So here we are talking about one triangle. Let this be the triangle and its vertices have been given as A, B and C. The coordinates of vertices are 4, 6, 1, 5 and 7, 2. Now one line is intersecting the sides AB and AC at points D and E in such a manner. This is point D and this is point E. Now this point D is actually dividing the line segment AB in two parts, and also this point E is dividing the line segment AC in two parts, or say two sections. So here the section formula is hidden, we will be using it. Now what ratio has been given? It has been given that AD upon AB is equal to AE upon AC equal to 1 by 4. यहाँ आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है इसका रेशो दिया है फुल लेंथ के साथ 1 by 4. दैट इज ये पार्ट है आपका 1 पार्ट और साथ ही साथ यहाँ दिया है ए बी एज 4 पार्ट्स. पर हम सेक्शन फॉर्मूला में उन दोनों पार्ट्स का रेशो लेते हैं जो लाइन सेगमेंट के दो छोटे पार्ट्स हो गए हैं. तो यहाँ हमें रेशो चाहिए ए डी इज टू डी बी का, ए डी इज टू डी बी, यही रेशो चाहिए. पर हमें क्या दिया है, ए डी इज टू ए बी दिया है 1:4. तो अब आप बताइए कि ये कितने पार्ट्स होना चाहिए. ऑब्वियसली इट शुड बी 4 - 1 दैट इज 3 पार्ट्स. और अब आपका जो रेशो हो जाएगा रिक्वायर्ड रेशो वो हो गया 1:3, ए डी इज टू डी बी. इसी तरह से ए ई इज टू ई सी ये भी हो जाएगा आपका 1:3. और अब जब हमें रेशो पता है, दोनों तरफ के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, तो सेक्शन फॉर्मूला से हम पॉइंट्स डी और ई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. फिर आगे हमसे पूछा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE. तो जैसे ही हमें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे डी और ई के सेक्शन फॉर्मूला से, तब हम इजीली इस एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्राइंगल ADE का एरिया, बिकॉज वी नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द 3 पॉइंट्स नाउ एंड देन वी हैव टू कंपेयर दिस एरिया विद द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. तो फिर अगेन यहाँ पर हम ट्राइंगल ABC का एरिया भी फाइंड आउट करेंगे और फिर दोनों एरियाज को कंपेयर करेंगे, इसका मतलब उनका रेशो फाइंड आउट करेंगे. So let us now proceed one by one. Here we begin the solution. The vertices of A, B, C are A, B and C as given in the question, and points D and E lie on AB and AC respectively. Here we have the figure. These lie on AB and AC respectively such that AD upon AB is equal to AE upon AC equal to 1 by 4. Now this ratio implies that AD is to DB is equal to 1:3 and AE is to EC is equal to 1:3. Now by using the section formula we can easily find the coordinates of D and E. By using section formula coordinates of D are yes, the ratio is here 1:3. तो x कोऑर्डिनेट के लिए पहले ये 3 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 4 से, 3 × 4 प्लस देन 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1 itself, सो 1 × 1 और बॉटम में आएगा आपका 1 + 3. देन फॉर y कोऑर्डिनेट 3 × 6 प्लस 1 × here we will have 5, 1 × 5 upon we have 1 + 3. This will be equal to, yes, 4 3s are 12 plus 1 13 upon 4 and this one will be 6 3s are 18 plus 5 23 upon 4. These are the coordinates of point D. Now we will find the coordinates of
E. We write them here. X coordinate, again the ratio is 1:3, तो 1 multiply होगा यहाँ पर 7 से, 1 into 7 plus then this 3 will be multiplied by 4, 3 into 4 upon we will have 1 plus 3, then 1 multiplied by 2, 1 into 2 plus then 3 multiplied by 6, so 3 into 6 upon again 1 plus 3, this will be equal to 7, and here we have 12, 12 plus 7 is 19 upon 4, and then 6 3s are 18, 19, 20 upon 4. This can further be written as 19 by 4, and this will be number 5. So, these are the coordinates of E and these are the coordinates of D. Now, what we have to do? We have to find the area of triangle ADE. Just have a look, find the area of triangle ADE. So, we find it here. The coordinates of D and E, let us write those coordinates once again. For D we have 13 by 4 and 23 by 4, and for E we have 19 by 4 and 5. Now we can find the area of triangle ADE. The coordinates of point A are 4, 6, you can see. So we can write here also A is 4, 6. Now area of triangle ADE, this will be given by half, then the x coordinate of first point 4 हो गया ये, and then 23 upon 4 minus 5, ठीक है, then the x coordinate of second point which will be 13 by 4, and then the difference 5 minus 6, and then we have 19 by 4 and then 6 minus 23 by 4. This will give you half. 4 into here you will have 23 minus 20 upon 4. This is the first part. Then here we have 13 by 4 into minus 1, and then we have 19 by 4. Here we can write 24 minus 23 upon 4. Again, on solving it, we get it as 23 minus 20, it is 3, and upon 4. Here we have minus 13 by 4. Here we have 19 by 4 into 1 by 4. This 4 and 4 will be cancelled. We will be having half into 3 minus 13 by 4 plus 19 upon 4, 4 is 16. Now we need to take the LCM. Half is here. Take 16 as the LCM. 16 3s are 48 will be here, minus 4 into 13, it's 52 plus 19. Solving it further, what we see? We see it as half. Here we have 8 and 9, 17 and 1, 67 minus 52 upon 16, and this is 15 upon 32 square units. This is the area of triangle ADE. Now we also have to find the area of triangle ABC so that we can compare the two areas. So we find the area of triangle ABC. For this we take a new page, area of triangle ABC. This will be, let me write the coordinates once again. A, it is 4 6, then B is 1 5, it is 4 6, B is 1 5, and C is your point 7 2. So now we can find the area easily. This will be half 4 into 5 minus 2 plus 1 into 2 minus 6 plus 7 into 6 minus 5. This will be half. 5 minus 2 is 3. This will be minus 4 here, and here 7 into 1. This will be half. Here we have 4 3s are 12 minus 4 plus 7. This is half. 12 minus 4 it's 8. 8 plus 7 it's 15. So this is nothing but 15 by 2 square
units. Okay, now what else has been asked? We have to compare the two areas. ये आपका आया है 15/32 और ये आपका आया है 15/2. तो दोनों एरियाज को कंपेयर करने के लिए हम इनका रेशियो फाइंड आउट करेंगे. लेट अस राइट रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. इसका एरिया आया था आपका 15/32 square units. Just have a look. 15/32 square units of triangle ADE, and this one is 15/2 square units. So ratio 15/2. Got it? Now we can divide both sides by 15. तो ऐसे में हमें क्या मिलेगा? ये 1/32 is to 1/2. Now we can multiply both the sides of the ratio by some same number. Let us multiply by a common multiple of 2 and 32. Yes, 32 itself. 32 is a multiple of 32 also and that of 2 also. So on multiplying both sides by 32, we get it as 1/32 into 32 is to 1/2 into 32. This on simplifying will give us 1:16, and this is the ratio of the area of triangle ADE to the area of triangle ABC. This means that the area of triangle ADE is 1/16 of the area of triangle ABC. और आप फिगर में भी देख सकते हैं कि ये छोटा है ट्राइंगल. देखिए आप, ये ट्राइंगल ADE छोटा है ट्राइंगल ABC से और इसका एरिया 1/16 है of the area of triangle ABC. Got it? In this way we have compared the two areas by finding their ratio. Now we can go towards question number 7. Here it is said, let A, B and C be the vertices of triangle ABC. Again there is a triangle. The median from A meets BC at point D. Find the coordinates of the point D. So again let us draw one triangle here. Let this be the triangle. Again we have been given the vertices as A, B and C, and the coordinates of A are 4, 2, that of B are 6, 5 and that of C are 1, 4. Now what has been said? The median from A meets BC at D. Median क्या होता है? It is the line segment joining one vertex to the midpoint of its opposite side. तो यहाँ पर जो मीडियन होगा, अगर हम अपना मीडियन ड्रॉ करें, लेट अस ड्रॉ द मीडियन AD. This is the median. What does this mean? This means that D is the midpoint of BC. क्योंकि जब एक वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाते हैं तो जो लाइन सेगमेंट मिलता है उसी को हम मीडियन कहते हैं. तो यहाँ पर ये जो पॉइंट D है ये हो गया मिड पॉइंट ऑफ BC और हमसे पूछे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D. ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पर इजीली मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हुए हम पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वी बिगिन द सॉल्यूशन. गिवन AD is the median of triangle ABC. This implies D is the midpoint of BC, and therefore by midpoint formula coordinates of D are, let us write down these coordinates. How to write them? Add up the x coordinates on both sides and divide by 2. Add up the y coordinates on both sides and divide by 2. तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, 6 plus 1 upon 2, 5 plus 4 upon 2. This is nothing but 7/2 and 9/2. Got it? Next we have one more part in this question. Find the coordinates of the point P on AD such that AP is to PD is 2:1. ये है हमारा मीडियन और अब हमने मीडियन के केस में ये पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट कर लिए हैं और अब इस मीडियन पर एक पॉइंट P लेना है इस तरह से कि वो AP और PD का जो रेशियो है 2:1 में डिवाइड कर रहा है AD को. So the point P will lie somewhere here.
and it is dividing AD in the ratio 2:1. And here we have to find the coordinates of P. Again here we will be using the section formula. So we write here bisection formula coordinates of P are, yes, बताइए कैसे मिलेगा? यहाँ पर जो रेशो है उसके पार्ट्स को देखिए 2:1 है, तो 2 तो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 7/2 से, 2 into 7/2 प्लस 1 will be multiplied by 4, 1 into 4 upon we will have 2 plus 1. Got it? This is the x coordinate. Y coordinate के लिए 2 will be multiplied by 9/2 plus this 1 will be multiplied by 2, 1 into 2 और यहाँ आ जाएगा 2 plus 1. रेशो के दोनों पार्ट्स का सम डिनोमिनेटर में. नाउ दिस 2 and 2 will be cancelled. बीच में मल्टीप्लाई है तो ये कैंसिल हो सकते हैं. इस 2 से इस 4 को कट मत कर दीजिएगा, यहाँ बीच में प्लस है. जब भी दो वैल्यूज़ के बीच में मल्टीप्लाई साइन होता है तभी वो ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो सकती हैं नंबर्स. सो हियर वी विल हैव 7 plus 4 11/3 and here we will have again 2 and 2 will be cancelled, 9 plus 2 11/3. So these are the coordinates of point P. ठीक है, ये हमने सेकेंड पार्ट भी कर दिया है. Then we have one more part. Find the coordinates of points Q and R on medians BE and CF respectively such that BQ is to QE is 2:1 and CR is to RF is 2:1. Again, अब यहाँ पर फिर से हमें दो मीडियन और लेने हैं. एक है BE, तो इस केस में पहले हम ले रहे हैं BE. ये एक और मीडियन ले लिया हमने ट्राइंगल का, और इसका मतलब क्या हुआ कि E मिड पॉइंट है इस साइड AC का. ठीक है, क्योंकि मीडियन की डेफिनेशन ही यही है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग वन वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड. तो E हो गया मिड पॉइंट AC का. तो पहले हम E के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से. फिर हमसे कहा गया है कि BE पर एक पॉइंट Q लीजिए सच दैट कि वो BQ is to QE 2:1 रेशो में ये BE को डिवाइड करेगा पॉइंट Q, और फिर हमें Q के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q. पहले हम एक एक करके कर रहे हैं. ये मीडियन ले रहे हैं BE, तो आप लिखेंगे सिंस BE is the median of triangle ABC, this implies E is the midpoint of AC. ठीक है, therefore coordinates of E are, बताइए कैसे लेंगे हम E के कोऑर्डिनेट्स. 4 plus 1 5/2 हो जाएगा, और यहाँ से 2 plus 4 6/2 दैट इज 3. सो 5/2, 3 ये हो गए इस पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स 5/2 और 3. ठीक है, अब हमें यहाँ पर BE पर एक पॉइंट Q लेना है. इस तरह से यहाँ पर पॉइंट एक Q लेना है जो BE को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करे. देखिए BQ is to QE 2:1. तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. वी राइट हियर नाउ पॉइंट Q divides BE in ratio 2:1. Therefore, by section formula, coordinates of Q are, let us find them. कैसे मिलेंगे देखिए. x कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा 5/2 से, 2 into 5/2 प्लस ये 1 मल्टीप्लाई होगा 6 से, सो 1 into 6 अपॉन 2 plus 1. ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट. ठीक है, 1 मल्टीप्लाई हुआ 6 से और 2 मल्टीप्लाई हुआ 5/2 से. फिर y कोऑर्डिनेट के लिए अगेन 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3, सो 2 into 3 प्लस दिस 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5, सो 1 into 5, और डिनोमिनेटर में 2 plus 1. दिस विल गिव यू here 5/2 into 2, so 2 will be cancelled. 5 plus 6 11/3, and here
5 and here 2 3s are 6, 6 plus 5 it's again 11/3 coordinates of Q. देखिए आप ज़रा P के कोऑर्डिनेट्स भी तो यही आए थे 11/3 11/3 और यहाँ पर Q के भी यही आ रहे हैं. चलिए आगे चलते हैं. वी हैव टू टेक द थर्ड मीडियन CF. वी ड्रॉ द फिगर इन दिस वे. दिस इज द थर्ड मीडियन. ठीक है. और मीडियन का मतलब क्या हुआ कि वर्टेक्स C से हम ज्वाइन कर रहे हैं AB के मिड पॉइंट को. तो F जो हो गया वो AB का मिड पॉइंट हो गया. और अब पहले हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से F के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे. चलिए इतना तो करते हैं पहले. वी राइट हियर CF इज द मीडियन of triangle ABC. This implies F is the midpoint of AB. Therefore, by midpoint formula, coordinates ऑफ FR. बताइए कैसे मिलेगा. दोनों तरफ के आप x कोऑर्डिनेट्स को एडअप कीजिए. 6 + 4 10 एंड देन डिवाइड बाय 2. 10/2 इट्स 5 एंड देन 5 + 2 7/2. सो वी हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ F एज 5 एंड 7/2. ये हो गए F के कोऑर्डिनेट्स. अब फिर क्या कहा गया है कि CF पर एक पॉइंट R लेना है हमें इस तरह से कि CR/RF आपका हो रहा है 2:1. तो यहाँ पर एक पॉइंट R लेना है CF पर जो अगेन इसे 2:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है. CR/RF इज 2:1. ठीक है. तो अब हमें फिर से यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है. कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं पॉइंट R के. ये देखिए CR/RF इज 2:1. सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. वी राइट हियर now point R divides CF in ratio 2:1. Therefore, coordinates of R by section formula R. We write them here. बताइए ये 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 5 से 2 × 5 प्लस ये 1 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 1 से 1 × 1 अपॉन 2 + 1. ठीक है. फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा 7/2 से और ये 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से 1 × 4 अपॉन 2 + 1. Now on simplifying what do we get? 2 5s are 10 + 1 11 upon 3 and here 2 and 2 will be cancelled. 7 + 4 again 11/3. ये हो गए coordinates point R के. Now what has been said here? Nothing else here. Let us see further what has been asked. What do you observe? देखिए आप क्या देख रहे हैं हम. Let me change the color for a while. This is point R, coordinates of point R. Then this is point Q, coordinates of point Q, and these are the coordinates of point P. तीनों ही केस में हमें सेम कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट से क्रॉस कर रहे हैं, एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं. वी राइट इट हियर विद अ डायग्राम. फर्स्ट वी ड्रॉ वन फिगर ऑल्सो. Yes, this is the triangle. Okay, and here we are drawing the 3 medians. Yes, this is one median, this is the other median, and this is the third median. In this way we have drawn the 3 medians A, B, C. ये हो गया आपका पॉइंट D, ये हो गया आपका E और ये हो गया F. और यहीं पर आपका पॉइंट P भी था, Q भी था और R भी था. तीनों पॉइंट्स यहीं पर थे, P, Q और R. और तीनों के ही केस में 11/3 कोऑर्डिनेट्स मिल रहे थे.
तभी तो तीनों पॉइंट सेम है, तीनों के कोऑर्डिनेट सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, तीनों पॉइंट्स अलग अलग ना होकर के बिल्कुल सेम पॉइंट है, तभी तो कोऑर्डिनेट सेम है। और इसका मतलब तीनों मीडियंस जो हैं एक ही पॉइंट से गुजर रहे थे, और ये जो पॉइंट है जहाँ से तीनों मीडियंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हुए गुजर रहे हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। वी राइट इट हियर, आंसर we see that the coordinates of points P, Q and R are same. This means the points P, Q and R are कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक लाई कर रहे हैं, एक ही पॉइंट है एक तरह से। वी हैव दिस नोट ऑल्सो इन योर क्वेश्चन, द पॉइंट विच इज कॉमन टू ऑल द थ्री मीडियंस इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड and this point divides each median in the ratio 2:1. Got it? Then we have one more part in this question. If A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3 are the vertices of triangle ABC, find the coordinates of the centroid of the triangle. ये है triangle ABC जहाँ पर हमने coordinates लिख दिए हैं, और ऐसे केस में हमें centroid के coordinates बताने हैं। तो एक मीडियन ड्रॉ करते हैं, ए से मान लीजिए ये है मीडियन आपका ए डी, तो पहले डी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से, फिर यहाँ पर जो आपका सेंट्रॉइड है वो यहाँ पर लाई करेगा, पॉइंट पी जो हमने लिया था पहले केस में वो इसको 2:1 के रेशो में डिवाइड करेगा, और ऐसे में हम इस सेंट्रॉइड पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। सो वी राइट हियर, लेट ए डी बी द मीडियन of triangle ABC. Then D is the midpoint of BC. Therefore coordinates of D, देखिए ये क्या हो जाएंगे आपके मिड पॉइंट फॉर्मूला से, दोनों तरफ के कोऑर्डिनेट्स एडअप करने हैं, x के केस में x कोऑर्डिनेट्स एडअप करेंगे, x2 plus x3, x2 plus x3 and then divide by 2, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y2 plus y3 upon 2। ये हो गए पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स। नाउ द सेंट्रॉइड P, let P be the centroid, then P divides AD in ratio 2:1, then by section formula coordinates of P we will find, coordinates of P are, देखिए आप ये रेशो है 2:1 और हमें P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पर हमने D के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, x2 plus x3 upon 2, y2 plus y3 upon 2, ठीक है, दिस इज 3। तो कैसे करेंगे, दोनों तरफ में ये 2 तो मल्टीप्लाई होगा x2 plus x3 upon 2 से, और 1 मल्टीप्लाई होगा x1 से। सो वी राइट हियर 2 into x2 plus x3 upon 2 प्लस 1 इंटू x3, और डिनोमिनेटर में आएगा 2 plus 1। ये तो हो गया x कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट के लिए 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय y2 plus y3 अपॉन 2, दिस इज y, हाँ, अपॉन 2 प्लस दिस 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय y1, यहाँ पर देखिए इससे। सो हियर वी कैन राइट 1 इंटू y1 upon 2 plus 1. These are the coordinates of point P. Now you can cancel out this 2 and 2, and here also cancel this 2 and 2. What do you get? The coordinates of P you will get as
of centroid. P is the centroid that we have taken, and these will be x1 plus x2 plus x3 upon 3. देखिए आप यहाँ से x1 आएगा, यहाँ पर हमने ये गलत लिख दिया है, दिस शुड बी x1, क्योंकि आप देखिए 1 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर x1 से, देखिए आप, तो 1 इंटू x1 विल बी देयर. सो व्हाट डू वी गेट, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 हमें मिलेगा यहाँ पर. और इस केस में देखिए हमने लिख दिया है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और यहाँ y कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से मिलेगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3. सो वी कैन राइट हियर y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3. So these are the coordinates of centroid of a triangle. Just have a look. यहाँ पर ये x1, ये x2, ये x3, तीनों का एडअप कर लीजिए. 4 प्लस 6 10 प्लस 1 11 अपॉन 3. देखिए 11/3 आ रहा था हमारा x कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड का. फिर y कोऑर्डिनेट्स एडअप करते हैं. 2 प्लस 5 7 प्लस 4 11 11/3. तो इस केस में भी हमें सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिल रहे हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3. Got it? Now we move towards question number 8. ABCD is a rectangle formed by the points A, B, C and D. P, Q, R and S are the midpoints of these sides respectively. Is the quadrilateral PQRS a square, a rectangle or a rhombus? Justify your answer. So here we will be taking one rectangle. Let this be the rectangle. The coordinates of vertices have been given. A is -1 -1. Then we take B here as -1 4. Then we have C here with 5 4. And then we have D with coordinates 5 -1. Then we have been given P, Q and R and S are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. तो यहाँ AB का midpoint है P, BC का midpoint है Q. Then here we have point R, midpoint of CD, और यहाँ है point S, midpoint of AD. और अब हमसे पूछा है ये जो quadrilateral है PQRS, इनको join कर लेते हैं तो हमें एक quadrilateral मिलेगा. Let me write once again. Yes. This is the quadrilateral PQRS and here we have to examine whether it is a square or a rectangle or a rhombus. ये बताना है कि ये जो quadrilateral बीच में बन रहा है ये rectangle है या square है या rhombus है. तो क्योंकि पहले यहाँ पर ये mid points दिए हैं तो पहला काम तो क्या बनता है बताइए आप. Yes, first we will apply the midpoint formula and get the coordinates of points P, Q, R and S. ठीक है. और फिर जब हमें ये चारों ही वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे तो अब कैसे पता करेंगे कि ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है. यहाँ हमें निकालने होंगे 6 डिस्टेंसेस. पहले तो हमें चारों साइड्स निकालनी होंगी यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, और फिर हम निकालेंगे 2 डायगनल्स की लेंथ यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, और फिर प्रॉपर्टीज़ देखेंगे इन तीनों में से किसकी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है और वही क्वाड्रिलेटरल हमें मिल जाएगा. So we proceed first by finding the coordinates of points P, Q, R and S. Let us write the solution. Points P, Q, R, S are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively. And now we have to find the coordinates of P first. Yes, tell me. P के लिए दोनों तरफ के x coordinates को आप add up करके 2 से divide कीजिए. -1 and here we have -1. So -1 plus -1 upon 2, and for y -1 plus 4 upon 2. This will give you -2 upon 2, that is -1, and here we will have 3/2. So -1 3/2. Here coordinates of Q. Q है midpoint BC का, तो इसके केस में देखिए दोनों तरफ के x coordinates को आप एड अप कीजिए. 5 -1 अपॉन 2 और ये मिल जाएगा 4 + 4 अपॉन 2. This will be 5 - 1 4/2, that is 2, and here it will be 8/2, that is 4. So 2 and 4.
कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, तो दोनों तरफ से एक्स कोऑर्डिनेट्स एडअप कीजिए, 5 + 5 अपॉन 2 एंड देन वी हैव -1 + 4 अपॉन 2. This further will be equal to 5 + 5, 10/2 will be 5 and 4 - 1 is 3/2. So 5 and 3/2. In case of S, it is the midpoint of AD. दोनों तरफ से x coordinates हो गए 5 + -1. So we can write 5 - 1 upon 2 and -1 + -1. So -1 - 1/2. This can be written equal to 5 - 1 is 4/2 is 2 and -2/2 is -1. So in this way we have got the coordinates of points P, Q, R and S. I hope all of these are clear to you. Now we will find the lengths of the sides of this quadrilateral. We move further. This is the figure where we have the quadrilateral PQRS with the coordinates, and now in quadrilateral PQRS, first we will find the length PQ. This is square root. First we find the difference between the x coordinates, 2 minus of -1, it will become 2 + 1 whole square, and then we have 4 - 3/2 whole square. This will be further 2 + 1 is 3 and 3 square is 9. Here we will have 4 2s are 8 - 3/2 whole square. This can be written as 9 plus here 8 - 3 is 5, 5 square is 25 and 2 square is 4. Again here we will get 9 4s are 36 plus 25 upon 4. This is equal to square root 61/4, or we can write it as square root 61/2 units. This is the length of PQ. Then we find QR. Square root QR, आप देख सकते हैं coordinates 5 - 2 whole square plus 3/2 - 4 whole square. This will be equal to square root 5 - 2 is 3, 3 square is 9. Here we will have 3 - 8 upon 2 whole square. This will give you square root 9, and here -5 will be left, -5 square is 25 and upon 4. This will further be square root 36 plus 25 upon 4. This will be equal to square root 61 upon 2 square, not square, it is not the area, only distance, so it will be units. Got it? Then we need to find the length RS. Here 5 - 2 whole square plus 3/2 minus of -1 will be +1 whole square. This will be square root 3 square will be 9, and here we will have 3 plus 2 1s are 2 upon 2 whole square. This will be square root 9 plus 25/4. Again this is the same expression, it will be 36 plus 25 upon 4 equal to square root 61/2 units. This is the length RS, and then finally we have to find the length SP. SP, square root S here and P here. 2 minus of -1 will be 2 plus 1 whole square, plus here -1 and here -3/2 whole square. This will further be equal to 9 here, and here we will have -5/2 whole square. This is again 36 plus 25 upon 4, and this is again root 61/2 units. So what we see? All the four sides are equal. So this can be either a square or a rhombus. Now how to decide whether it is a square or rhombus? We need to find the length of the two diagonals. If the two diagonals are equal, then it will be a square, and if the two diagonals are not equal, then it will be a rhombus. So we take one more page.
and now we find the diagonals. First we find PR, okay, square root, let us see PR. This is the first diagonal. 5 minus of minus 1, it will be 5 plus 1 whole square, plus here 3 by 2 minus 3 by 2 whole square. So this will be 0, this right part, and here we will have root 6 square, and this will be finally 6 units. It cannot be negative because it is a distance, so we will take only the positive value. 6 units हो गई. Then we find SQ, the second diagonal. Square root, here we see SQ. This is the second diagonal. 2 minus 2, here we will write 2 minus 2 whole square, plus here we will have minus 1 minus 4 whole square. This will be equal to square root, this part will be 0, and here we will have 25. Again it will be 5 units. So what do you see? Are the two diagonals equal? No, they are not, and so this is a rhombus. We can write here in quadrilateral PQRS, PQ is equal to QR equal to RS equal to SP, but diagonals PR and SQ are not equal. Hence all the 4 sides are equal, but diagonals are not equal in length, and hence PQRS is a rhombus. Got it? That was an easy one, not that much difficult. So with this we complete exercise 7.4, and with this we complete this chapter 7, coordinate geometry. I hope you enjoyed your journey with me and you understood whatever topics we had taken up here in this segment and also in the previous segments. With this, practice these questions and enjoy life, have fun. Goodbye.